Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 15 from English Grammar Tree. We were discussing verb and its kinds. In previous lecture, we discussed finite verb, and today our topic will be non-finite verb. So first of all, the definition of non-finite verb. Non-finite is opposite of finite verbs. Non-finite verbs are those verbs that are not limited with number, person, or tense. Discussing about finite verbs, we said that finite verb is always limited with number, person, or tense, but non-finite verbs are not limited by number, person of subject or tense. So it means कि नंबर या पर्सन सब्जेक्ट का जो भी हो ये अपनी हालत पे बाकी रहेंगे, इनके साथ ना एस ई एस का इजाफा होगा, ना इनकी सेकंड फॉर्म होगी, ना इनकी थर्ड फॉर्म होगी, इनकी जो शक्ल है ये उसी पर ही बाकी रहेंगे. दे आर नॉट एसेंशियल इन सेंटेंस. किसी सेंटेंस में इनका आना लाजमी भी नहीं है. फाइनाइट वर्ब का हमने कहा था कि कोई सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, लेकिन ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब ना हो, फ़कत फाइनाइट वर्ब हो. ओके, लेकिन फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर. ओके, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग्स. राइट, इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स. वेरियस शेड्स मीन बहुत सारे शेड्स हैं इसके मीनिंग्स के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ये मीनिंग्स कन्वे करते हैं आगे. Okay, there are three kinds of non-finite verbs. In other words, you can say non-finites are three. First one is participle, second is called gerund, and third is infinitives. So we can say there are three kinds of non-finite verbs. First one is called participles, second is called gerunds, and third is infinitives. First one, participles. Participle is, in fact, it has two kinds. Okay, present participle and past participle. Past participle वही होता है जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. वर्ब की तीसरी फॉर्म उसको past participle कहा जाता है. And present participle is ing form. Okay, for example, playing, closing, opening, reading. Okay, ing form. So participles, whether it is ing form or third form, okay, third form sometimes it comes with ed. For example, play, played, played, open, opened, opened, and sometimes it comes with en. Okay, for example, break, broke, broken, broken. Okay, from the verbs used as adjective. Okay, keep in mind this thing. Okay, adjective when ing form of verb or third form of verb, when it is used as adjective, वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि किसी चीज की सिफत क्वालिटी एडजेक्टिव के तौर पे जब ये यूज होते हैं, then they are called participles. Okay, so participles that end in ing and represent a continuous or incomplete action are called present participles. ing form अक्सर present continuous tense में आती है, ओके, लेकिन वो verb के तौर पे आती है. लेकिन जब हम इसको verb की बजाय adjective बनाकर कहीं पे यूज करते हैं तो then we call it participle. Okay, participle as non-finite verb. Example: I saw a man carrying a basket of fruits. In this example, you can see I is person, first person, saw is second form of see. This is finite verb. Okay, past tense to change हो गया. A man, object. Okay, what was the quality of
दिस मैन, ओके, इस मैन की क्या सिफत थी, क्या एडजेक्टिव क्या है, कैरिंग, जो उठाए हुए था। उस मैन की क्या क्वालिटी है यहाँ पे, उसने उठाया हुआ है। व्हाट, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की टोकरी, ओके। अब इसमें जो कैरिंग आया है, कैरिंग इज मॉडिफाइंग द मैन, ओके, मैन के बाद आ रहा है लेकिन उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको खास कर रहा है, ओके। तो here participle carrying is not used as a verb but it is used as adjective, यहाँ पे adjective के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ओके। so this is why this is non finite verb। अब अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस बना लें तब भी यही आएगा, I see a man, मैं एक आदमी देखता हूँ, कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, जिसने फ्रूट्स की बास्केट उठाई हुई है। कैरिंग कैरिंग ही रहा है लेकिन सॉ बदल गया सी में, प्रेजेंट टेंस में, ओके। अगर आप इसको फ्यूचर टेंस बनाएं, आई शैल सी, देखिए शैल सी में बदल गया सॉ, तो फाइनाइट वर्ब। अ मैन, आई शैल सी अ मैन कैरिंग, कैरिंग वही रहेगा, फ्यूचर हो पास्ट हो, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। अब इसका पर्सन भी चेंज कर दें, ही सॉ अ मैन कैरिंग, ओके, दे सॉ अ मैन कैरिंग, वही आएगा। तो पर्सन से या टेंस के चेंज होने से या पर्सन के चेंज होने से इसकी शक्ल नहीं बदलेगी बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अपनी शक्ल नहीं बदलता है, वर्ब अपनी शक्ल बदलता है, राइट। लेकिन बिकॉज दिस इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, है हकीकत में वर्ब लेकिन इस्तेमाल किस तौर पे हो रहा है, एज एडजेक्टिव, इसलिए अपनी शक्ल नहीं बदलता है। तो participle that ends in ed, third form of verb, or d or en or t, okay, they represent a completed action or state of thing spoken of or called past participles। जो थर्ड फॉर्म में आते हैं पार्टिसिपल, वो ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो कंप्लीट हो चुका हो वो, ओके, लेकिन एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लाइंडेड बाय रेज he stormed out of the room, okay, rage mean anger, गुस्सा, okay। blinded by rage, blinded is here modifying he, okay। So in this example, blinded by rage, गुस्से से अंधा, अंधा हो जाना, okay, गुस्से में। कौन गुस्से से अंधा हुआ है, he। So this is modifying this pronoun he, okay, and third form is used here। So he stormed out of the room, वो रूम से बाहर निकला गुस्से की हालत में, स्टॉर्म यानी कि तूफान बन के निकला गुस्से में, ओके, शदीद गुस्से की हालत में वो बाहर निकला, ओके, गुस्से से अंधे होते हुए वो रूम से बाहर निकला, ओके। ही स्टॉर्म्ड, पास्ट टेंस, ओके, और ये चेंज हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ब्लाइंडेड कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको आप चेंज कर लें, यू कैन मेक इट फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, blinded by rage he will storm out of the room, will आया तो storm आ गया, ये चेंज हो गया, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये वही रहा है, blinded by rage he will storm, blinded by rage he storms, present tense, ये चेंज हो गया, वो चेंज नहीं हुआ, ओके। So this is participle, okay, and the participle does not change its form when it is used as adjective, okay। There is third kind of participle, participles that take the form having, okay, plus past participle। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर हैविंग आ जाए तो और वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, ओके, तो उसको कहा जाता है दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। इट represent action that completed in some time in past, पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, so they are called perfect participles।
For example, having slept late, he could not get up early in the morning. Okay, he could not get up early in the morning. वो जल्दी सुबह ना उठ सका. रीजन क्या था? Having slept late. रात को देर से सो जाने की वजह से, क्योंकि वो रात को देर से सोया था. Okay, he could not get up early in the morning. अच्छा, अब इसको अगर आप could यहाँ पे past tense के तौर पे आया. Okay, can की सेकंड फॉर्म. इसको आप प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में चेंज करें तो ये चेंज हो जाएगा. दिस इज फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये चेंज नहीं होगा. ओके, इसको हम फ्यूचर बनाते हैं. हैविंग स्लेप्ट लेट, देर से सोने की वजह से. ही विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कैन नॉट. ओके, प्रेजेंट टेंस, सॉरी इसका हमने प्रेजेंट टेंस बनाया है. तो ही कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कैन, कुड कैन में चेंज हो गया है, लेकिन हैविंग स्लेप्ट लेट वैसे का वैसे रहेगा. दिस विल नॉट बी changed. Alright, this was all about participles. So in short we can say participles have three kinds. Present participle that ends with ing and used as adjective. Then a past participle, third form of verb, and the third kind is perfect participle. Having plus third form, it makes perfect participle. They are used as adjective. They do not change their form according to tense, according to number and number of subject, or according to person of subject, right? Next kind is gerunds. Gerunds, ing form of verb used as noun. This is also ing form, only ing form of verb. Okay, participle में भी ing form आती है एक, और gerund भी ing form है verb की. लेकिन फर्क यह है कि participle में ing form जब आती है तो वो adjective बन के आती है, but in gerund ing form is used as noun. यहाँ पे noun बन के आती है, adjective बन के नहीं आती. A gerund is the form of verb which ends in ing, जो ing भी खत्म होता है, and has the force of noun. इसमें noun की ताकत पाई जाती है, ना कि adjective की. Noun and a verb, लेकिन meaning verb का दे रहा होता है. इसकी शक्ल, इसका action जो होता है वो as a verb, as a noun होता है. Okay, for example, I like reading poetry. I like reading poetry. I is subject, like is finite verb, and क्या चीज पसंद करते हैं? Reading. मुझे reading पसंद है, reading poetry. Okay, तो I subject, like verb, and reading is object. And object is always noun. Object हमेशा noun होता है. Okay, क्योंकि ये noun की जगह है, right? तो अब यहाँ पे reading आ गया noun की जगह पे, तो हम इसको कहेंगे this is gerund. It is used as a noun. मुझे पसंद है, क्या चीज़ पसंद है? Reading poetry. Reading पसंद है मुझे, तो reading is as a noun. This is object. Object is always a noun. Okay. Similarly, for example, you say walking. You say I like walking in the morning. Walking is as a noun. Okay, इसको आप subject की जगह पे भी ले आ सकते हैं. You can say walking is good for health. Walking is good for health. Walking is subject. Okay, और subject noun होता है. This is noun. Walking ing form of verb, but it is used as a noun. It has the force of noun. ये subject बन रहा है, कभी object बन रहा है. Okay, right? So this is called gerund. Third kind is infinitives. Infinitives in Urdu we call it masdar. इसमें masdar जिसे कहा जाता है, खाना, पीना, रोना, हंसना. Okay, in Urdu. But in English, the infinitive, this form of infinitive is to plus
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू के बाद फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लिखते हैं तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल टू कम, आना, टू गो, जाना, टू राइट, लिखना, टू रीड, पढ़ना, टू प्ले, खेलना। तो टू के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी that will be called infinitive, मस्दर, और ये फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, इन्फिनेटिव इज द बेस ऑफ वर्ब, ये वर्ब की बेस होती है, मस्दर होता है। ऑफन प्रीसीडेड बाय टू, ये अक्सर टू के बाद आता है, प्रीसीडेड बाय टू। फॉर एग्जाम्पल ही सब्जेक्ट रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, दिस इज नॉन फिनाइट वर्ब, पास्ट टेंस। किस चीज से? टू ओबे, इताअत करने से इनकार कर दिया। टू ओबे द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया, मानना, इताअत करना, ओबे करना। ओके, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, आप इसको फ्यूचर बना लें, ये चेंज हो जाएगा, फिनाइट वर्ब है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, नॉन फिनाइट। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हम कहते हैं ही विल रिफ्यूज, फर्स्ट फॉर्म वापस आ गई, टेंस चेंज हो गया बिकॉज दिस इज फिनाइट वर्ब, ही विल रिफ्यूज। लेकिन ये भी चेंज होगा, नो, दिस इज नॉन फिनाइट, he will refuse to obey the order, I will refuse to obey the order, he refuses, present tense, he refuses to obey the order, to obey अपनी जगह पे to obey ही रहेगा। Okay, now the exercise is underline the finite verbs and circle the non-finite verbs in the given sentences। जो finite है उसको underline करना है, non-finite को circle करना है। Taming of wild animals is cruel। Okay, taming of, taming, ing, this is used as noun। Okay, taming of animals subject की जगह पे आया हुआ है, so this is noun, this is gerund। is cruel is used as a main verb here, linking verb, and this will be called a finite verb because it has the other form। for example ये change हो सकता है, taming of wild animal was cruel, will be cruel, तो is change हो रहा है। ओके, बट taming change नहीं होगा, taming ही रहेगा। ओके, taming is from tame mean domesticate, to make animals as pet। ओके, जंगली जानवरों को पेट्स बनाना या उनको पालतू बनाना, दिस इज क्रूअल, दिस इज क्रूएल्टी, ये जुल्म है, नाइंसाफी है। ओके, सो you will circle non-finite verb like this and underline finite verb। She bought a packet of frozen peas। Okay, she subject, bought is finite verb, second form of buy, उसने खरीदा। Okay, क्या चीज खरीदी? A packet of frozen peas। Okay, frozen को आपने सर्कल करना है और इसको आपने अंडरलाइन करना है, राइट। frozen is third form of freeze, but here it is used as adjective of peas। peas के adjective के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यानी फ्रीज किया गया peas जो आड़ू होते हैं, ओके, उनको जिनको फ्रीज किया गया। तो फ्रोजन इज मॉडिफाइंग peas, so this is participle। okay, past participle used as adjective of peas, right। you will do rest of the examples like this। now here is the explanation that we already have discussed। okay, look at the following sentences। he refuses to give us permission, refuses, present tense, s का इजाफा हुआ है इसमें, and to give is infinitive। okay, he refuses to give, refuse third person singular present tense। okay, this is now subject is third person singular and tense is present, so we use s। अब आप इसको चेंज कर दें पास्ट में तो रिफ्यूज चेंज हो जाएगा बिकॉज दिस इज फाइनाइट वर्ब, लेकिन टू गिव चेंज नहीं होगा, दिस इज इन्फिनिटिव। he refused past tense to give us permission, प्रेजेंट टेंस में भी टू गिव था, यहाँ पर भी टू गिव, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन फाइनाइट। इसको फ्यूचर में बदल दें,
He will refuse to give us permission. Refuse फिर change हो गया, first form आ गई, लेकिन to give अपनी शक्ल पे बाकी है. I refuse to give. Now the writer has changed the person. पहले third person singular था, अब first person. I refuse to give बाकी है अपनी हालत पे. इसको आपने चेंज किया, इसका नंबर दे प्लूरल हो गया, लेकिन refuse चेंज हुआ और to give अपनी जगह पे बाकी है. Okay, the verb refuse is limited by person, number and tense, and it changes its form accordingly. It is a finite verb. Okay, but the verb to give does not change. It is not limited by person, number or tense. It is an infinitive. Right. Similarly, gerunds are not limited by person, number or tense. Now some examples of gerund. Okay, ये भी limited नहीं होते. Walking is good for health. Walking non-finite gerund as a noun इस्तेमाल हुआ है. is finite verb है. is change हो सकता है. Walking was good for health. Walking will be good for health. Walking अपनी जगह बाकी है, लेकिन बाकी change हो रहा है. I like walking in the evening. यहाँ पे as a object आया है. Okay. She likes walking. She आ गया, लेकिन walking अपनी जगह पे और likes change हो गया. Previously he liked, past tense हो गया, लेकिन walking उसी तरह ही बाकी है. They like, person change हुआ, like हो गया, बाकी walking वैसे के वैसे ही बाकी है. Examples of participles. His mother had a worried look. उसका चेहरा जो है वो परेशान है. परेशान look को उसकी है, परेशान चेहरा उसका है. This is modifying look. Okay. तो worried is participle used as adjective. Okay. Had past tense है. Okay. ये change हो सकता है. इसको आप present में करेंगे तो he has, had has में change हो गया, finite verb, लेकिन worried अपनी जगह पे बाकी है. they person change हुआ, they had आ गया, worried अपनी जगह बाकी है. it is a worrying factor. Okay. Worrying ing form modifying factor. is change हो सकता है. it was a worrying factor, it will be a worrying factor, लेकिन worrying change नहीं होगा. Okay. Here are some exercises for your homework. You will do it yourself. Combine the following pairs of sentences by using infinitives. Okay, two sentences have been given. You will convert them into one sentence by using infinitives. Infinitives use करना है. For example, he did not have enough money. उसके पास ज़्यादा रकम ना थी. First sentence, full stop. He could not buy a loaf of bread. वो bread का एक लुकमा भी, एक पीस भी नहीं खरीद सकता था. There are two sentences. अब इनको हमने एक बनाना है infinitive यूज करके. Infinitive हम second पे यूज करेंगे by क्या. ओके. He did not have enough money to buy a loaf of bread. ये खत्म हो जाएगा. ओके. और by से पहले infinitive है, इससे पहले to आ जाएगा. He did not have enough money to buy a loaf of bread. एक ही sentence बन गया, हमने infinitive में change कर दिया. Okay. Next see, she went to Lahore. Full stop. She wanted to see the Lahore fort. उसने लाहौर का किला देखना था. अब इसको one sentence में कैसे convert करेंगे. She went to Lahore. ये खत्म हो जाएगा. She went to Lahore to see the Lahore fort. Okay. अब एक sentence बन गया ये. She went to Lahore to see the Lahore fort. Okay. Okay, next exercise, combine the following pairs of sentences by using participles. Okay, इस exercise में participle use करके एक sentence बनाना है. The watchman opened the gate, we entered. The watchman opened the gate, we entered. There are two sentences, so we can convert it by saying, opening the gate by watchman, we entered. If you see the next example, they had no food. उनके पास खुराक नहीं थी. They could not give the children anything to eat.
वो अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते थे. Now, by using participle, we can convert them into one sentence. Okay, you can say, for example, they had no food. Having no food, right? Having no food, comma, they could not get the children anything to eat. Having no food, they could not give the children anything to eat. His teacher encouraged him. He persevered and won the competition. His teacher encouraged him. Encouraged by the teacher. Encouraged by the teacher, comma, he persevered and won the competition. Likewise, you will try to change these sentences by using participle, and you will convert them into one sentence. Lost exercises: identify the gerund and participles in the following sentences. This is a bit easy. You will underline gerund and write over the word. You can write G, or you can write in front of it G. Gerund is walking. Okay, for example, walking on the grass is forbidden. Walking is your ing form. This is as gerund. Okay, noun, subject. Okay, she is fond of listening to old film songs. She is fond of listening. वो listening की शौकीन है. Okay, listening is here not used as a verb but as a noun. Okay, किस चीज़ की शौकीन है वो? Listening. Okay, to old film songs. Okay, similarly you will find out participles and gerund from these examples. Okay, here's the end of this chapter.